Good evening, guys, and welcome back to my lecture on corporate and allied laws for final CA. I'm really sorry, I don't know after how many months I'm resuming these lectures back, and I'm not sure if I can consistently resume them because my mom had some serious medical procedures such as cataract operations and some retinal ailments of which she's presently undergoing treatment. I also missed 1 month of my offline lectures in the classes where I used to teach. So really sorry about that. Let's hope we can resume with the syllabus. Okay, so I think in the last question number 10, where I think I spoke about the director's responsibility report. By the way, this is chapter number 2. Open your practice manual and come to accounts and audit, right? Come to page number 2.7, question number 10. So I've covered question number 10 and I will now be going to question number 11. In question number 10, I was mentioning this code MP mein aag lag gayi, right? If you viewed the previous video, you'll come to know where M stands for I think material departures and and short forms like that. So I mentioned section 134 over there, subsection 3, subsection 5. Subsection ko blankly bhul jao, you will not remember it, so just remember section 134. Now before I go on to question number 11, there's one thing I want to tell you, that in the initial pages, like the first page of your practice manual, which is blank, right? The next page where it mentions the revised edition, the reprint, website, email, a word about practice manual, where you have some space. And on the last pages where you have the column for the notes and you have some few blank pages over there. So just make a list of all the fines and penalties, like in any answer in the practice manual wherever you come across. For example, how I've made section 182, contravention for political contribution. If you contravene a provision for political contribution as per the Companies Act 2013, the company has to pay a fine up to 5 times the amount involved, and every officer imprisoned up to 6 months imprisonment and or fine up to 5 times. So just mention that. Then section number 185, this is I think even on page 5.3 from practice manual. Contravention for advancing LIGs, LIGS. LIGs is my short form for loans, investments, guarantees, securities to a director. So if you're advancing loans, guarantees, securities, etc. to a director and he's interested, then the giver of the loan, that is the company, has to pay a fine of 5 lakhs to 25 lakhs and receiver of loan imprisonment of 6 months and or, that means cumulative or alternative condition, that you may be fined and imprisoned also, 6 months fine and or fine ranging from 5 lakhs to 25 lakhs. I'm not teaching this, I'm just mentioning how to make a note of it, because there are so many penalties, so many different imprisonments, like some may have 6 months, some may have 1 year, some may have 1 year to 10 years, so you'll really mix it up. So on these pages over here, and after these pages complete, then go on to continue on to a separate notebook, make a complete list of section wise fines and imprisonments. Don't sit and hunt out wherever fines and imprisonments are there. As and when you read the answers in the practice manual, as and when you come across, keep mentioning them. Don't sit to find कि कहाँ पे imprisonment है, कहाँ पे fine है. जैसे जैसे तुम पढ़ते जाते हो, जैसे जैसे तुम्हें दिखते जाता है, वैसे वैसे तुम mention करते जाओ कि ये पेज नंबर पे ये सेक्शन के हिसाब से इतना फाइन है, इतना imprisonment है, whether that offense is compoundable or non-compoundable. Compoundable मतलब पैसे भर के बाहर हो जाएगा, non-compoundable मतलब you only have to face imprisonment, and bail if any will depend on the tribunal or court order. Also, if you want, you can make a section of case laws. जहाँ पे case laws दिखता है, जैसे यहाँ पे मैंने नोट किया है Re-Ballador and Silk Limited. Re-Ballador Silk Limited. If majority directors override minority directors, not a ground to claim relief from oppression and mismanagement. Only oppression of members in their character is allowed. This again comes under oppression and mismanagement. हमने देखा है, I think section 397, 398, 399 ये sections जिनमें आते हैं. Noakes versus Lancaster Amalgamated Collieries Limited. House of Lords stated that workers are not furniture and their services cannot be transferred without their consent. Companies amalgamate होती हैं तो companies के साथ workers को वहाँ पे new company amalgamated company में काम करना है कि नहीं, that is on their consent. So ऐसे ऐसे case laws का list बनाते रहो, ठीक है? Piramal SPG versus Weaving Mills Limited. Keep making such a list. Also, I'll be mentioning some short forms how to memorize answers. जैसे inspection के लिए तुम report लिखते हो central government को. I'll just tell you. Hold on 1 second. ये मैं ऐसे ही basic tricks बता रहा हूँ. Then I'll continue with the answers. Inspection कहाँ गया? Practice manual में inspection का record खोलो.
Chapter 6, page number 6.1. हाँ देखो, दिख रहा है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ही दिख रहा है. Majority of board of directors of Messiah's High Value Infotech have realized that some of the business activities carried out in the name of the company are not in the interest of either the company or its members. लोग झोल कर रहे हैं. They want that the company should make an application to the central government to appoint an inspector to carry out investigation and find out the whole truth. Explain the steps that should be taken to achieve the purpose and draft the application under Companies Act 2013. So according to section 210 of the Companies Act 2013, the central government may order an investigation into the affairs of the company if it is of the opinion that registrar ने रिपोर्ट दिया है वगैरह वगैरह. तो अब यहाँ पे ये मैं तो आंसर नहीं पढ़ा रहा हूँ. आई कम बैक टू दिस चैप्टर सेपरेटली. हम लोग सेलिंग कि इसके अंदर जो सेक्शन 210 है इसको कैसे याद करने का है कि देखो अभी ये लोग 2 नंबर का काम कर रहे हैं, राइट. 2 नंबर का काम कर रहे हैं. वी वांट टू करेक्ट दैट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है 2 नंबर का काम बंद करो और 1 नंबर का काम करो, राइट. जस्ट मेकिंग मेमोराइज. 2 नंबर का काम बंद करो, 1 नंबर का काम करो, अच्छा काम करो, सो दैट ऑल दीज रॉन्ग डूइंग्स आर नलिफाइड. नलिफाइड मतलब 0 हो गए, सब गलत काम बंद हो गया. नाउ यू नॉट फॉरगेट सेक्शन 210. 2 नंबर का काम बंद करो 2, 1 नंबर का काम करो 1, सब रॉन्ग डूइंग्स नलिफाई हो जाएंगे 0. सो 210, दैट्स व्हाई मेमोराइज 210. ऐसे बहुत सारे सेक्शन नंबर्स के मैंने स्टोरीज बनाए हैं, बट जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद I'm telling you how to learn. So come back to question 11 in the second chapter, accounts and audit. Let's continue from where we left. Subsection number अगर मैं बोलता हूँ तो it's just for the video, and exam में खाली section number ही तुम याद रखो. Also keep writing down whatever I'm saying here because I'm compressing the answers. Now since you're compressing the answers, तुम्हें practice वाले लोग का थोड़ा बहुत तो language maintain करना पड़ेगा. That is why do not use answers like जैसे टैक्स में नहीं कहते हैं, सुभाष भिड़े सर है भिड़े क्लासेस के, सुभाष भिड़े इज वेरी फेमस फॉर डायरेक्ट टैक्स. ही सेज कि डू नॉट राइट इफ द असेसिंग ऑफिसर फील्स दैट ही मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और scrutinize the books of account. Use language if the assessing officer is of the opinion that, not if the assessing officer feels. If the assessing officer is of the opinion that, or if the assessing officer has reasons to believe. So law में भी ऐसे language use करो कि reasons to believe, of the opinion that. ऐसा मत बोलो कि if you feel like, if the inspector feels like इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगेगा ये वो, ऐसा नहीं करने का. यूज गुड लैंग्वेज. ऑल्सो डोंट यूज वर्ड्स लाइक स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. से कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ऑलराइट, यूज सम रिफाइंड लैंग्वेज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. कीप नोटिंग डाउन इन योर नोटबुक बिकॉज आई एम कंप्रेसिंग द आंसर्स. क्वेश्चन 11. हाँ, द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रॉबर्टसन लिमिटेड for laying the annual accounts thereat for the year ended 31st March 2014 was not held as the accounts were not ready. In this context, advised the company regarding compliance of the provisions of section 137 of the Companies Act 2013 for filing of copies of financial statements with the registrar of companies. Right? Now the AGM ought to be held within 6 months from the close of the financial year. ये हमें पता है from section 96 of the Companies Act 2013. IPCC में भी पढ़ा रहेगा कि ईयर एंड है भी सपोजिंग 31st मार्च, तो उसके 6 महीने के अंदर मतलब टिल 30th सितंबर यू हैव टू होल्ड द AGM एंड ऑल दैट. एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी हैव टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम व्हेन द AGM ought to be held. So it's not necessary तुमने होल्ड किया AGM को या नहीं होल्ड किया, फ्रॉम द टाइम व्हेन इट ought to be held उसके 30 दिन के अंदर यू हैव टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द रजिस्ट्रार with the fees plus additional fees in form number AOC 4, right? And if the AGM was not held and if you're holding an adjourned AGM, so you still file the financial statements with the registrar within 30 days from when the AGM ought to be held. And when you hold the adjourned meeting, तो तभी actual documents तुम फाइल करो रजिस्ट्रार के साथ. तब तक जो तुमने फाइल किया that will be taken as provisional documents, right? So we saw this question. AGM ought to be held by 30th September 2014, correct? Because इसका year close हुआ रॉबर्टसन का 31st March 2014. So submit documents to registrar with fees plus additional fees by 30th October 2014. अगर 30th September तक close होता है उसके 30 days के बाद तक तुम्हें ड्यू है, तो 30th October 2014. That is section 137, right? So even if AGM is adjourned, file unadopted financial statements as provisional with the registrar and later file actual. Now, will it make any difference in case the annual accounts were duly laid before the annual general meeting held on 27 September 2014, but the same were not adopted by the shareholders?
I've already covered this question in the previous part कि यहाँ 27 सितंबर है, हमारा डेडलाइन था 30 सितंबर, 6 months from the close of the financial year, तो टाइमलाइन के अंदर ही है, 30 के पहले 27 आ रहा है, so it's within the time limit, just within 30 days from 30th September, that means by 30th October you have to file the financial statement plus consolidated financial statements with the fees plus additional fees if any to the registrar in form number AOC4. Khatam. Next question. State the procedure for the following. This question number 12. Explaining the relevant provisions of the Companies Act 2013. Appointment of first auditor. Please excuse me, I'm getting a phone call. Just a minute. Hello. Just leaving. हाँ ये क्लाइंट का कॉल आया था. सीए लोग की ज़िंदगी बेकार है, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाओ, क्लाइंट्स को भी संभालो. नाउ state the procedure for the following. Appointment of first auditor when the board of directors did not appoint the first auditor within 1 month from the date of registration of the company. Right? So अभी तुम याद करो, स्कूल में तुमने ज्योमेट्री के टाइम पे एक 30, 60, 90 थ्योरम पढ़ा रहेगा. ट्राइंगल के केस में 30, 60, 90 थ्योरम होता है ना. तो अभी फर्स्ट ऑडिटर बीओडी ने अपॉइंट नहीं किया. नो यू नो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 और जनरली ऑल्सो the board of directors have to appoint the first auditors within 30 days of registration of the company. If they fail to do so, they have to inform the members, and the members will hold an EGM, and at the EGM they will appoint the auditor within 90 days, right? And the new auditor will hold office from the conclusion of the first AGM till the next AGM. So he'll hold office till the conclusion of the AGM. अभी 30, 60, 90 थे, मैं 60 तो उड़ा दिया, खाली 30 और 90 की बात किया. मतलब जब भी हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो बीच में निकाल नहीं रहे हैं, 60 बीच में आ रहा है ना. वी एक्सपेक्ट हिम टू होल्ड ऑफिस टिल द एंड, 30 एंड 90 ऐसे याद करने के लिए, राइट. BOD has to appoint the auditor within 30 days of registration of the company. If he fails to do so, he'll inform the members. The members will hold an EGM, and he will hold office till the conclusion of the first AGM. Right? Within 90 days, the members have to appoint the auditor in the EGM if the BOD fails to do so. Next question. Removal of statutory auditor appointed in last AGM before the expiry of his term. So, if you remove a statutory auditor before the expiry of his term, you require approval of the central government. So, pass a board resolution to that effect, and pass a board resolution to remove the auditor. And within 30 days of passing the board resolution, you apply to the central government. How do you apply to the central government? In form ADT2. So, apply to the central government within 30 days of passing the board resolution. And if the central government gives you permission, within 60 days of receiving the central government permission, याद करो CG को हमने अप्लाई किया था फॉर्म 82 के अंदर. CG का अप्रूवल आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ गया. विदिन 60 days of the approval, you can pass a special resolution to remove the auditor, giving the auditor an opportunity of being heard. So all these provisions are considered under section 140 of the Companies Act 2013. So pass a board resolution within 30 days of the board resolution, apply to the central government in form 82. Within 60 days of the central government's approval, pass a special resolution to remove the first auditor. राइट, इसको कैसे याद करते हैं? 140 है ना इसका सेक्शन नंबर. वो प्रीवियस वाला फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए सेक्शन था सेक्शन 139. 139 को भी कैसे याद करते हैं वो भी तुमको बताता हूँ. अभी फर्स्ट ऑडिटर है, सबसे पहला आदमी है, तो उसका नंबर तो 1 ही आने वाला है, राइट. और ऐसे याद करो कि ऑडिटर के बाद बहुत पैसा है, इसके पास 3 बंगलो है, तो 1 के बाद आ गया 3. और ये फर्स्ट ऑडिटर क्यों बना कंपनी का सबसे पहले ऑडिटर? बिकॉज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ही वॉज रेटेड 9. बहुत मेहनती था, वेरी हार्ड वर्किंग, सो ही गॉट द 9th स्केल. इसलिए इतना 3 गाड़ी है, इतना मेहनती है. आउट ऑफ 1 to 10 इज रेटेड 9. सो 1, 3, 9 फर्स्ट ऑडिटर हो गया. अभी उसको हमको हटाना है, फर्स्ट ऑडिटर को हटाना है, तो गो 1 स्टेप अहेड. 1 का 1 रहा और 3 का हो गया 4. अभी बोलते हैं 9 का आएगा, तुम मेहनती तो था ही नहीं, तुम्हारा 0 हो गया. जो तुमने फिगर दिखाया था मैं मेहनती हूँ, 9 हो गया, 3 लगाने, अभी तुम 0 हो गए, थ्रोइंग योर गेट आउट. सो सेक्शन 140, राइट. पहले फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ 139 के अंदर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हम निकाल रहे, तो 3 की एक स्टेप आगे निकालने के लिए 3 से 4 पे गए, 9 का 0 हो गया. गाइज आई एम सॉरी, यूट्यूब हैज प्लेस्ड अ 15 minute लिमिटेशन एज आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. 15 मिनट के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड होता नहीं है, तो आई हैव टू अपलोड इन पार्ट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट.